Hello everyone, welcome to Oliveboard. In this particular video, we are going to discuss about SEBI has revised the enhanced surveillance measure. Okay, so let's get the discussion started. SEBI has introduced a new valuation based filter to ESM for the stocks which are based less than 1000 crore market capitalization. Basically, these are small cap companies who are having the market capitalization less than 1000 crore. So this ESM norms need to be followed only by the small caps company who are having the market capitalization below 1000 crore. What is the full form of ESM? Enhanced surveillance measures. Okay, so we don't have to go into too much detail of this particular circular or news. We just need to cover the major things because this particular news is having too much data, okay, which might be relevant for our examination as well. So let's start the discussion completely exam oriented. The updated norms aim to prevent the speculative prices rallies while safeguarding the fundamentally small and micro caps firms from the undue regulatory burden, because there is a huge volatility in the prices of the small cap companies. We all know that small cap companies का प्राइस बहुत ही ज़्यादा volatile होता है. उसी को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक ट्रिगर फॉर्म किया गया है, वैल्यूएशन बेस्ड फिल्टर लेके आए. ओके, here we can see the full form of ESM, enhanced surveillance measure, that can be important for our examination, so please do remember this. The applicability of this particular news is very important. The market capitalization should be less than 1000 crore. It is applicable only to those companies having the market capitalization less than 1000 crore. What do you mean by market capitalization? Market price per share multiplied by the number of shares in the market. That's your market capitalization. Okay, so if your market capitalization is less than 1000 crore, you need to follow this. The first surveillance mechanism and threshold is stage 1 trigger. So here we are having two stages. First one will be the stage 1 trigger. If you are having the abnormal price volatility, अगर आपकी price is highly volatile, so there are criteria like 3 months, 6 months and 12 months data. If there is a high amount of volatility in your stock, definitely you will be falling under the stage 1 trigger. Consistent closing price gains over the past 3 months. In the past 3 months, you are consistently, your stock price is closing in gain, that too for the past 3 months. Okay, actions 100% margin facility will be imposed, trade for trade settlement and trigger price band. अपर सर्किट लोअर सर्किट आपके स्टॉक पे ट्रिगर हो जाएंगे. ओके, सो ये कुछ चीजें दे रखी है. वी डोंट हैव टू गो इनटू टू मच डिटेल. फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इन दिस पर्टिकुलर न्यूज इज द फुल फॉर्म ऑफ ESM, देन द limit of the market capitalization less than 1000 crore. You need to know that this particular circular will be implemented in two stages, stage 1 trigger and stage 2 trigger. Obviously stage 1 जो है वो preliminary है, stage 2 है जो advanced है. ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरियाज दे रखे हैं जिनको आप बाद में पढ़ सकते हो. तो अलग अलग वॉलेटिलिटी और वेरिएशन के बिहाफ पे देयर आर मेनी क्राइटेरियाज हियर व्हिच हैज बीन स्टेटेड. ओके, but my personal suggestion is don't try to remember each and every data of this particular news because it might not be relevant for your examination, right? ये बहुत ही ज़्यादा detailed है, इसको आप broadly ऊपर से पढ़ सकते हो. That will be more beneficial for you. Okay, so in this particular video we'll be only doing the exam oriented discussion related to this particular circular. Again they have stated that stage 1 entry condition क्या होनी चाहिए. तो आपका entry condition volatility is your entry condition here, right? और एक्शन क्या रहेगा आपका स्टेज 1 के अंदर? एप्लीकेबल मार्जिन शैल बी 100% फ्रॉम ट्रांजैक्शन प्लस 2 डे. सो T+2 से आपके ऊपर 100% मार्जिन एप्लीकेबल हो जाएगा. और अपर सर्किट लोअर सर्किट भी लग सकते हैं आपके स्टॉक प्राइस पे 5% के. और अगर ऑलरेडी 2%, देखो 2 से 5% के अपर सर्किट लोअर सर्किट लग सकते हैं. अगर 2% ऑलरेडी है तो फिर 5% लगेगा. ठीक है, अगर 2% ऑलरेडी है तो फिर 5% लगेगा. अपर सर्किट लोअर सर्किट का क्या मतलब होता है? देखो अगर आपका स्टॉक 100 रुपये पे, तो 105 से ऊपर ये जा नहीं सकता. इट कैन नॉट गो बियॉन्ड 105 एंड इट कैन नॉट गो बिलो द 100. ओके, 100. सो इसको क्या हो गया? ये +5% हो गया और ये आपका -5% हो गया. दैट्स द क्राइटेरिया बेसिकली. ओके, देन वी आर हैविंग द स्टेज 2 ट्रिगर्स. ओके, सो स्टेज 2 के अंदर आपके अलग अलग क्राइटेरियाज दे रखे हैं बेस्ड ऑन द पी रेशो. व्हाट इज पी रेशो? प्राइस, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर. दैट्स योर पी रेशो क्राइटेरिया. सो यहाँ पे अलग क्राइटेरियाज दे रखे हैं आपके कि इन 5 कॉन्सिक्यूटिव डे क्या वोलेटिलिटी आ रही है, राइट? क्लोज टू क्लोज वेरिएशन क्या चल रहा है, मंथली बेसिस पे क्या चल रहा है, और पी रेशो क्या चल रहा है उसका. पी रेशो अगर 0 है, उससे कम है, या फिर
पी रेशो 2 टाइम्स से भी ज्यादा है एक बेंचमार्क के, जैसे निफ्टी 50 का पी रेशो मान लो 10 है, पर आपका पी रेशो 20 आ रहा है, 2 टाइम्स या उससे भी ज्यादा आ रहा है, सो यहाँ पे आपके ऊपर फिर स्टेज 2 ट्रिगर्स लगने चालू हो जाएंगे और उसके अंदर और भी सीवियर यहाँ पे स्टेप्स लिए जाएंगे. ओके, सो बेसिकली स्टेज 1 इज टोटली वोलैटिलिटी बेस्ड एंड स्टेज 2 इज योर P ratio based, price to earning based ratio based. Okay, then there will be review period and exit. Stage wise review stock will be there on the weekly basis. So weekly basis पे आपकी stages review की जाएंगी. Securities that is completing the 90 days period in the ESM framework would be eligible for exit from the framework. अगर 90 days आपके इसमें हो गए, सब सही चल रहा है, you can get a exit from this particular framework. However, in case of the securities under stage 2, अगर stage 2 के अंदर है, so it shall be retained under stage 2 for a minimum 1 month period. Okay, so कम से कम 1 month period के अंदर वो वहाँ पे रहेगी आपकी, अगर stage 2 period के अंदर है. Okay, और 1 month कंप्लीट होने के बाद वापस रिव्यू किया जाएगा, फिर आपको वहाँ से हटाया जाएगा. Okay, so ये सारे यहाँ के criteria I have summarized each and everything for you in this particular table. You can definitely read this table as well. Plus at Oliveboard we are giving 60% flat off on all the regulatory exam subscription. The code is BDAY. You can subscribe for this particular offer as well. Let's quickly look कि इस particular news के अंदर से हमारे लिए क्या क्या important है. I will advise you to read the full form of ESM first thing. You should know the full form and the meaning of ESM. Second one is the criteria of market capitalization. Okay, 1000 crore, below 1000 crore. Then you need to remember यहाँ पे दो तरीके के ट्रिगर होते हैं, स्टेज 1 ट्रिगर एंड स्टेज 2 ट्रिगर. प्लस यू नीड टू रिमेंबर स्टेज 1 इज बिकॉज ऑफ abnormal price volatility. Okay, so we need to study the standard deviation of 3 months, 6 months, 12 months. Okay, if there is a problem with the volatility, if there is a high amount of volatility, we'll be taking some actions like imposing 100% of margin facility for trade to trade settlement, and we can also trigger the price bands. Okay, upper circuit and lower circuit. Again there is stage 2. In stage 2 we will be considering the price movements and plus P ratio. Okay, we'll be also considering P ratio. अगर आपका P ratio नेगेटिव टेरिटरी में या फिर 0 है, या फिर एक इंडेक्स के P ratio के 2 टाइम से भी ज्यादा है, सो इन दैट केस आपका स्टेज 2 ट्रिगर होगा जो कि सीवियर है. ओके, ऐसे केस के अंदर आपका रिव्यू किया जाएगा. सिक्योरिटी का कंप्लीशन 90 डेज का अगर ESM फ्रेमवर्क में हो गया तो वो एग्जिट कर सकती है फ्रेमवर्क से. However, अगर आप स्टेज 2 के अंदर हो तो उसका कम से कम आपको 1 मंथ यहाँ पे मिनिमम पीरियड रिटेन किया जाएगा अंडर द स्टेज 2 ओनली बिफोर आपका 90 डे का पीरियड चालू होगा वहां से. ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सर्कुलर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीडियो. ऐसी तरह की न्यूज को हमको ऊपर से डिटेल्ड मैनर के अंदर हर चीज फिगर नहीं याद रखनी है, बिकॉज वी ऑलवेज नीड टू फिल्टर आउट व्हाट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जामिनेशन, व्हाट कैन नॉट बी इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जामिनेशन. ओके गाइस, थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर.